सो हमारा क्लास 11th लेक्चर सीरीज का चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 है. टॉपिक 1 वी हैव फिनिश्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द लास्ट लेक्चर and we have solved many examples from JEE Mains question series. So today we'll study a new topic of this chapter, dimension analysis. Okay, so dimension analysis is a tool with the help of which we can derive the new relationship among many physical quantities. But there are some limitations in dimension analysis. This method does not tell anything about the dimensional constant. It gives no information whether the quantity is scalar or vector. It is not possible to derive relation that contains more than one term, like S equal to ut plus half at square or v square equal to u square plus 2s. This kind of relations cannot be derived using the dimension analysis. But we can derive f equal to mv square by r, or f equal to 6 pi eta rv, or time period equal to 2 pi root over L upon G. These are some famous relation among various physical quantities. It is easily derived with the help of dimension analysis. But this kind of relation cannot be derived. Okay, so since there are many physical quantities with the same dimensions, it is very difficult to identify them knowing dimension alone. So there are some limitations. Next we should study using some examples. So take the first example. अब इसमें से क्वेश्चन आया कैसे है थोड़ा ध्यान से देखते हैं. जो क्वेश्चन होता है ना डायमेंशन एनालिसिस में, यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि यू शुड नो हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बीन टॉट इन द प्रीवियस lecture. How to write dimensional formula of a physical quantity like force, work, coefficient of viscosity, surface tension, angular momentum, linear momentum, pressure. Okay, so with the help of dimension analysis we can establish relation among various physical quantities. Example, say a car of mass m is moving with speed v on a circular track of radius r. So as we know, any car that is moving on a circular track, it must have some force known as a centripetal force if you are observing from the ground. But if you are observing sitting inside the car, you will experience a centrifugal force, which is also equal to mv square by r. F equal to mv square by r. This is the formula of centrifugal force as well as centripetal force. But centrifugal force is a pseudo force, and it is observed by an observer sitting in non-inertial frame or accelerated frame. Okay, but if someone is sitting outside the car, or he or she is a inertial frame, then she or he will observe only centripetal force, friction, only real forces. Okay, so I hope you have studied this concept of inertial and non-inertial frame in your class 10 syllabus. Okay, now we have to derive this relation F equal to mv square by r. This is the centripetal force experienced by this car moving on a circular track. So how can we derive it? Using dimensional analysis. Very simple. In the given question, you'll be provided some data. The force depends upon say mass, velocity and radius. ओके, तो क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि जो फोर्स है, जो क्वांटिटी जिसके बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी. जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, द फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास, वेलोसिटी और आर पे. तो फोर्स को हम लेफ्ट में रखेंगे बिकॉज इसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है और ये डिपेंडेंट है. ये डिपेंड कर रहा है एम, वी और आर पे. ओके, सो बहुत सारे बुक में ऐसे लिखा रहता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम, वी एंड आर. उसके बाद क्या करता है, सेकंड स्टेप में इस साइन और प्रोपोर्शनल टू हटा के एक कांस्टेंट लिख देता है के. ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से नहीं डिराइव कर सकते. कोई के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कोएफिशिएंट या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू एनीथिंग हो सकती है जो कि फिजिकल कंडीशन से डिराइव होगी, ना कि डायमेंशन फार्मूला से. ओके, एम वी आर. अब तुम चाहो तो एग्जाम में अगर एम वी आर है तो तुम आर एम वी भी लिख सकते हो या आप कुछ भी लिख सकते हो. कोई टेंशन नहीं है कि एम को पहले लिखना. ठीक है, बट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे साइन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो लिख देना है के, जिसकी वैल्यू कुछ हो सकती है.
तो हम फिलहाल उसको यूज करने के लिए 1 लिख रहे हैं, ठीक है। सो एफ इक्वल टू के को हम लोग के लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप 1 भी लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखने से बेटर होगा कोई कांस्टेंट को के लिखो, बिकॉज ये हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। ओके, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है टाइम इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ओके, सो अगर हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला से इसको डिराइव करेंगे एल जी और टी में रिलेशन से, तो ये 2 पाई हम डिराइव नहीं कर सकते, यहाँ पे हम के लिखेंगे। अब इसी के की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई आती है फिजिकल कंडीशन को सॉल्व करने पे, एक्चुअली मुझे सॉल्व करते हैं टाइम पीरियड पर सिंपल पेंडुलम। ठीक उसी तरह इस फॉर्मूला में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई के है नहीं, यहाँ पे 1 एक्चुअली, तो यहाँ पे एक्चुअली के की वैल्यू क्या है 1। तो हमें तो नहीं पता है ना एग्जैक्टली कि क्या रिलेशनशिप आने वाला है, तो बेटर है कि हम लोग के को के लिखें। ओके, एम वी आर। अब एम वी आर स्टेप 1 में क्या करना है, ये लिखना है कि जो फोर्स है वो डिपेंड होता है एम वी आर पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब m के पावर a लिख दो, v का पावर b लिख दो और r का पावर c लिख दो, ये लिखना है स्टेप 1 में। ठीक है, खत्म। ये लिखना है हमेशा, जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होंगी उसको राइट में लिखना और डिपेंडेंट को फोर्स में लिखना और उसके सर पे a b c लिख देना। हमें इस a b और c की वैल्यू खोजनी है। दिस इज आवर इक्वेशन 1। हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ a b c? वेरी सिंपल, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी बोथ साइड। सो फोर्स का लिखते हैं ml t-2, वी नो mlt minus 2 force. K is a dimensional constant, yeah, proportionally constant, so I don't know the value, so I will write 1 here. M velocity का dimension lt minus 1, already we have studied in lecture 1 how to write dimension of any physical quantity. B r का होगा c. Okay, this is the first step. Step 2. What is step 2? Step 2 में equating the power of m, l and t both side. So first m का पावर इक्वेट करते हैं बोथ साइड। इधर पावर 1 है तो 1 लिखते हैं, इधर कितना पावर है a, और तो कुछ भी नहीं है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, देख लो। उसके बाद l लेंथ का पावर को इक्वेट करते हैं बोथ साइड। इधर लेंथ का पावर है 1 और राइट हैंड साइड में यहाँ पे है 1 इंटू बी और यहाँ l इंटू सी, मैंने 1 इंटू सी, टोटल यहाँ पे b एंड c, b प्लस सी, राइट। यहाँ पे l का पावर कितना है b और यहाँ l का पावर c, तो टोटल l का पावर b प्लस सी इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम, इक्वेटिंग द पावर ऑफ टाइम बोथ साइड, ईयर -2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पे देखो -1 इंटू बी माइनस बी और यहाँ तो कुछ है भी नहीं, इसका तो b इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 1। इफ यू पुट b हियर, b इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से निकाल के, तो c इक्वल टू -1 आ जाएगा, राइट। नाउ स्टेप 3 खत्म। स्टेप 3 में क्या करना है, पुट a b c इन इक्वेशन 1। ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो बनाए थे वहाँ पे पुट कर देंगे। सो f इक्वल टू सम कांस्टेंट k m टू द पावर a इज 1, सेकंड v का b का पावर कितना 2 और c r का पावर -1। सो क्या होगा k m v स्क्वायर r टू माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला। So with the help of dimension analysis, by writing the dimensions both side means writing dimensions of dependent and independent quantities, we can derive the relation among the various physical quantities. F equal to kmv square by a, and we know this is centripetal force. Okay, so now move to the next question. Again, we will take another example to understand better. So question number 2. I think I should take a question from the textbook. Okay, take another example. Okay, this is a good example. Question number 43. Here you can see, if velocity v, force f and energy E are taken as fundamental units. This is a very important question. If velocity, force and energy are taken as fundamental units, then dimensional formula of mass will be. You need to derive mass, formula of mass in terms of V, F and E. So here in this question we can use dimensional analysis. Okay, so here we need to derive the formula of mass. So mass depends upon V, F and E. So I will write mass in the left side and independent quantity like V, F and E on the right side. And using dimensional analysis I will find the power of V, F and E. So here mass depends upon VFE. So question number 2, mass depends upon, so I will write a proportionality constant K, and depends upon, mass depends on F, V
FV, force, velocity, and energy. You don't need to write EFV or FV. Whatever you wish, you can write. ठीक है, इसको ऑर्डर में लिखना जरूरी नहीं कि V आगे लिखेंगे, F, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी लिख सकते हो. M depends upon this three parameter. K is a proportionality constant as usual. K, F का power A, V का power B और E का power C. Now I need to find ABC. So very simple, by using a dimensional formula both side. M तो M ही होता है. K is a number. F, mass into acceleration. V, LT minus 1, energy ml2 t minus 2. तीनों का डायमेंशन पता होना चाहिए भाई. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, स्टेप 1 खत्म. स्टेप 2 में इक्वेटिंग पावर ऑफ m l t बोथ साइड. सो फर्स्ट मास का पावर इक्वेट करते हैं बोथ साइड. इधर पावर 1 है, इधर कितना है दोस्त, 1 इंटू ए, 1 इंटू सी, ए प्लस सी. राइट, यहाँ पे देखो 1 इंटू ए, यहाँ पे 1 इंटू सी. अगर नेक्स्ट लेंथ का पावर, इधर लेंथ तो है ही नहीं तो 0, ये तो लेंथ है ही नहीं लेफ्ट में. इधर कितना है, 1 इंटू ए, ये बी, देखो 1 इंटू बी, और बताओ यहाँ पे एल का पावर है 2, 2 इंटू सी. ये हो गया. ओके, राइट. ओके, नाउ टाइम, इधर टाइम है ही नहीं, यहाँ पे टाइम है -2a, यहाँ पे है -b, है ना, -1 इंटू बी, यहाँ पे है -2c, -2 इंटू सी. ओके, so ये हो गया. Now you need to solve these three equations. A plus A equal to 1, A plus B plus 2C. Okay, so I can write here 2A plus B plus 2C equal to 0, right? Okay, now try to solve this equation. If we solve it, we will get value of A, B and C. So here you can see they have solved. By solving these equations, you will get A equal to -2, B equal to 0 और C equal to 1. देखो जरूर नहीं कि तुम्हारा A -2 है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया होगा, इन लोगों ने V का पावर A माना है, F का पावर B माना है, E का पावर C माना है. मैंने थोड़ा अलग माना है, मैंने F का पावर A, अच्छा सही माना है, F का पावर A, V का पावर B. देखते हैं इन लोगों ने क्या है, नहीं इन लोग का अलग है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा. हम चाहते इजीली सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व करते हैं. जो क्या है इसमें, यहाँ से b प्लस 2c निकाल सकते हैं ना सीधा. तो यहाँ से b प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस 2c इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो 2a माइनस है इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 आ गया. ठीक है, अब a इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देते हैं, तो c इक्वल टू 1 आ गया. राइट, उसके बाद c इक्वल टू 1 आ गया. अब किसी में इक्वेशन पुट करेंगे तो b मिल जाएगा अपन को. इसी इक्वेशन पुट करते हैं, 0, a की वैल्यू 0, b नहीं पता, c की वैल्यू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, -2. तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1. तो हम इसको पुट कर देते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन में, और जो फाइनल रिलेशन आएगा m इक्वल टू सम कांस्टेंट k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आई डोंट नो. सो f a का पावर a की वैल्यू 0, v b का पावर -2 और e की वैल्यू 1. चलो चेक करते हैं, v का पावर -2, v का पावर -2, f का पावर 0, e का पावर 1, f का पावर 0, e टू पावर. करेक्ट. ओके, तो ऐसा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, सब बेटर समझ में आएगा. जैसे एक और ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन एक और लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. वही फेमस क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 से ऐसा बोला है कि सिंपल पेंडुलम का कुछ टाइम पीरियड है t, and it depends upon the mass of the bob, length of the string, okay, acceleration due to gravity. ऐसा बोला रहेगा कि t, the time of a simple pendulum proportional to mass, length and g. So time depends upon these three factors. So I will write time in the left side and equal to some constant k, sign of proportionality, mass, length and g. Okay, so this is the first equation, and I will put some power over mlg a b
C. Okay, I don't need to write any power over T because T is dependent quantity. So now write dimension of each physical quantity both sides. So time is time. K is a dimension constant, proportionally constant from the value. So I'll put 1 here. मास की जगह पे m लिख देते हैं, l की जगह पे b लिख देते हैं, मतलब l का पावर l के लिख देते हैं. ओके, g माने acceleration due to gravity, basically it's acceleration, so lt minus 2, that is c. Now equating power of mlt both side, if you put m here तो पहले मास का पावर इक्वेट करते हैं, तो मास इधर है ही नहीं, जीरो. इधर कितना है a, तो a इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट देखते हैं लेंथ, लेंथ का पावर इधर कितना है, जीरो. लेफ्ट में देखो लेंथ है ही नहीं, ठीक है ना सिर्फ. इधर कितना है, b प्लस सी, यहाँ से b, यहाँ से l इंटू सी. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं टाइम. टाइम का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है, माइनस 2c. सो c इक्वल टू माइनस हाफ. ठीक है, c इक्वल टू माइनस हाफ, तो b इक्वल टू प्लस हाफ. इफ यू पुट c इक्वल टू माइनस हाफ, विल गेट b और a 0. सो मेरे को वैल्यूज मिल चुकी है, a इक्वल टू 0, b equal to half and c equal to minus half. Now put these values in equation 1. So time period t here, this is equation 1. Time period t equal to some constant k. Here this is the value of k. m a का पावर 0, l का पावर हाफ और g का पावर माइनस हाफ. तो इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो t इक्वल टू k m to the power 0 means 1, l हाफ g हाफ, so l रूट, नीचे g रूट. तो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज t इक्वल टू सम कांस्टेंट k रूट ओवर l बाई g. देखो डायमेंशन एनालिसिस से हम लोगों ने रिलेशन तो पता कर ली कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ l एंड g, बट k की वैल्यू हमें मालूम है एक्चुअल में. अगर फिजिकल कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है k की वैल्यू एक्चुअली 2 पाई आती है, जो कि डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकती है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, बट उसके सामने के कोएफिशिएंट डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. ओके, तो ये अपना थर्ड एग्जांपल रहा. नाउ टेक द फोर्थ एग्जांपल. ओके, this is also a famous question. If the time period of a vibration of a liquid drop depends on the surface tension S, radius R and density rho of the liquid, then the expression of the time period. So you can try self, तुम चाहो तो कर सकते हो ये खुद से, यहाँ मैं दिखाता हूँ जल्दी करके. The time period depends upon S, R and rho. According to question, time period is depending upon S, T and S surface tension, R is the radius and rho is the density of liquid. So T equal to this. They have put a constant sign here K. Now S, R, rho, you can write R, S, rho whatever in the sequence, no problem. So here put X, Y, Z over S, R, rho, or you can put A, B, C over S, R, Z. Okay, now just writing the dimension formula of each physical quantity to both side. So टाइम पीरियड का डायमेंशन तो m0 l0 t1 भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ t to the power 1 भी लिख सकते हैं. ओके, डायमेंशन कांस्टेंट का वैल्यू k इक्वल टू 1 पुट कर लो, बाद में उसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सरफेस टेंशन. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन लेक्चर 1 द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज mt-2. सो s का जगह पे mt-2 और पावर x है तो x लिख दो, a भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. r जो है वो रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर्स, सो यू कैन राइट l in place of r as dimension. y लिख सकते हैं, रो क्या है, रो is a density, mass upon volume, same l to the power -3 and power is z. ओके, नाउ अगर हम इसको अरेंज कर लें तो m का टोटल पावर कितना है, x प्लस z, तो m का टोटल पावर है m x प्लस z. l का टोटल पावर क्या है, l का टोटल पावर यहाँ पे कितना है देखो y, यहाँ पे है -3z, तो l इक्वल टू y -3z. टाइम पीरियड का देखो, इधर है -2 और तो कुछ भी नहीं, तो -2x. Now equating the power of mlt both side, if you take m in the left side it is 0 and in the right side this is x plus z, so x plus z equal to 0. And second, l, this is y minus 3z, the total power of the l in right hand side is y minus 3z, so y minus 3z should be equal to 0. And the third, -2x should be equal to 1 because here power of time is 1.
So if you solve these equations, you will get x equal to minus half, y equal to 3 by 2 and z equal to half. Okay, you should try yourself. Solve करेंगे तो you'll get the answer. Now put this value in the equation 1. In this equation, you'll get like this. So this is how you can derive any relation among various physical quantities. Okay, similarly, this is the third question again. I think it's the fifth question of this lecture. If P represents the radiation pressure, C represents the speed of light, and Q represents radiation energy striking a unit area per second, then non-zero integers like x, y, z such that P to the power x, Q to the power y, and C to the power z is dimensionless. This is also a very good question, and this question has been asked in AFMC 1991, CBSE, CPMT, and many more national level exams. Okay, so how to solve this? Again, this is very simple. In the question, it is clearly mentioned. Then p to the power x, q to the power y, and c to the power z. This term is dimensionless. It means we should write px, qy, and cz equal to m0, l0, t0 because in this question it is mentioned they are dimensionless. So I should put 1, 1. In place of 1, you can write m0, l0, t0. Now, here, if P represents radiation pressure, C represents speed of light, Q represents radiation energy. So in place of P, what should you write? Radiation pressure dimension. So what is radiation pressure dimension? Very simple. Radiation pressure is a kind of a pressure exerted by the photon or light when it strikes the surface. So pressure is nothing but force upon area. So what is force? ml t minus 2. Mass into acceleration, area means L square. If you put m L to the power minus 1, T to the power minus 2, this is radiation pressure. Okay, so here in place of P, they have written ml minus 1, T minus 2, and the power is x, so they have put x here. Similarly, Q, in place of Q, you should write radiation energy. So forget radiation, it's a kind of energy, and we know energy is work. Okay, and work is okay. Here Q represents radiation energy in a unit area per second. Okay, you should find the dimension of Q. Okay, so let's find what is Q. So according to question, Q represents radiation energy striking a unit area per second. It means Q is basically energy per unit area per unit time. So what is energy? ml2 t minus 2. What is area? L square. What is time? T. कट गया तो m t to the power minus 3. ये हो गया q का डायमेंशन. ओके, सो q की जगह पे क्या लिखना है? mt minus 3. देखो उन लोगों ने q की जगह पे लिखा है mt minus 3. पावर y है तो y. नेक्स्ट है c to the power z. व्हाट इज c? c रिप्रेजेंट्स स्पीड. स्पीड मींस lt minus 1 एंड पावर इज z. ओके, ये हो गया. और इधर हमको मालूम है दिस शुड बी इक्वल टू m0 l0 t0 बिकॉज एज पर क्वेश्चन the product of PQC must be equal to 1 or dimensionless. So in place of 1 you can write m0 l0 t0. So you can equate the power of MLT both sides. So here the total power of m is x plus y. You can say m total power of m is x plus y in the left side, and the total power of L here minus 1 x, here z, so minus x plus z. Total power of t both side, here the total power is minus 2x minus 3y and minus 1z. Okay, now put x plus y equal to 0, the equating the power of L both side, minus x plus z equal to 0, and you can solve it. You can find x, y and z. So this is very simple. So many more questions are there, you can try yourself. So there are some limitations of dimension analysis. If the dimensions are given, physical quantity may or may not be unique, as many physical quantities have same dimensions. For example, if the dimensional formula of a physical quantity is ml to t minus 2, it may be work, energy or torque, because we know work, energy and torque, they all share same dimensional formula. Numerical constant having no dimension k, such as half, 2 pi, cannot be deduced by the method of dimensions. We have already studied.
Third, the method of dimension cannot be used to derive relation other than product of power function like this. Okay, so this kind of relation or this kind of trigonometrical relation or logarithmic relation cannot be found using dimensional formula. Okay, it cannot be derived using this theory. However, the dimensional correctness of this equation can be checked. Obviously, we can check the dimensional correctness. Here, more regions, limitations are given. You can go through this. Even if the physical quantity depends on three physical quantities, out of which two have same dimensions, the formula cannot be derived by theory of dimensions. Say किसी फॉर्मूला में ऐसा आया कि जो कोई एक पैरामीटर से, जैसे मान लो कि कोई एक पैरामीटर है जो डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे, टॉर्क पे और वर्क पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड रिलेशन बिकॉज एनर्जी, टॉर्क एंड वर्क तीनों का सेम डायमेंशन होता है. वही यहाँ पे बोल रहा है कि even if a physical quantity depends on three physical quantities out of which two have the same dimensions, the formula cannot be derived by the theory of dimensions. Example, formula for frequency of a tuning fork f del square by v cannot be derived by theory of dimension but can be checked. Okay, तो ये हो गया अपना डायमेंशन एनालिसिस का कुछ कॉन्सेप्ट्स. अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं. एक स्टोक्स लॉ आता है, वो भी हम डिराइव करते हैं. दिस इज स्टोक्स लॉ. दिस इज आल्सो वेरी common question. When a small ball sphere moves at a low speed through a fluid, the viscous force F opposing the motion is found to. ये बहुत simple है ये, it will be taught in the fluid dynamics, fluid static. तो अभी ये है अपने क्लास 11 में. बट मान लेते हैं कि जो फोर्स है, कोई भी स्फीयर जब किसी लिक्विड में गिरता है तो वो एक फ्रिक्शन फोर्स फील करता है, उसको लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं. द विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन थ्री पैरामीटर्स: कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, radius of the ball sphere, and v the speed of the ball. Okay, so now we can see F is dependent quantity. F depends upon eta rv, so I can write F equal to eta rv and some dimension constant or proportionality constant. But I have already studied this k is a proportional constant and we assume is the dimensionless. Its value can be a numerical value. Okay, so eta xyz, I can put xyz here. How to find xyz? Just writing the dimension formula of each physical quantity both sides. So what is force? mlt minus 2. So in place of F I can write mlt minus 2. What is eta? Eta is the coefficient of viscosity. We know the dimension of coefficient of viscosity is ml minus 1 t minus 1. I have already studied in the lecture 1. Radius, length, v, lt minus 1. Now equating the power of mlt both sides. The total power of m in the right hand side is x. The total power of L in the right hand side is minus 1 into x, y and z. So minus x plus y plus z. The total power of t in the left side is minus 1x and minus 1z. So minus x minus z. And the total power of m in the left side, 1 equal to x, L here 1, here minus x plus y plus z. So this can be written 1. So similarly you can solve these equations and you will get x, y, z equal to 1. So if you put these values in the equation 1 here, you will get a relation F equal to k eta rb. But if you do it experimentally, on experimental ground, you will find the value of k is found to be 6.5. So this is the Stokes law. When a solid sphere falling through a viscous liquid, it experiences a viscous force that is equal to 6 pi eta rb. But using dimensional formula or dimension analysis, we cannot find the exact value of k, which is found to be 6 pi. It can only be derived on experimental grounds. Okay, so this is all we have studied today. I'm trying to find another question. The largest mass m that can be moved by flowing a river depends upon this. Again, the similar type of question here. One quantity depends upon the other three physical quantities here. So here mass m depends upon v, rho, and g. So very simple. Here mass depends upon v, rho, g. Now you have to find the correct relation. So we can find here mass depends upon v, rho, and g. Right? Here you can see the mass depends on velocity, density, and acceleration due to gravity. So need to derive relation among these physical quantities using dimensional formula. Very simple. मास का m लिख देते हैं. अच्छा यहाँ पे v rho के सर पे abc लिख देते हैं. k is a proportionally constant, is dimensionless. ठीक है, तो k को 1 लिख देते हैं, dimensionless है ना.
तो v क्या होता है दोस्त, lt minus 1 to the power a. what is density mass by volume, so m l minus 3, इसका पावर b लिखते हैं, g के एक्सेलरेशन lt minus 2, इसका लिखते हैं c. now equating the power of mlt both side जैसा हमने किया है, you can find a b and c. ओके, सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है. जब सॉल्व करेंगे फाइनली जो ABC आएगा उसको वापस पुट कर देना, यू विल गेट द रिलेशन. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन कराए तुमको. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अदर यूनिट सिस्टम और एरर. ओके, बाय.